he came back to Rashtrapati Bhavan and there was an album given to him. And the album, it was written Bunyad. Bunyad is a very strong word, it says foundation. So foundation is the most important thing. And subject to correction, if I remember it correctly, why the China and India, both of us started together, but China, as I understand, is way ahead of us because China invested in human resources, we invested in heavy industries. We have our own issues, they had their own issues, but now there is a difference. So education is must, it starts from the very beginning. So far we are concerned in law, we try to enter into each and every field. For example, I appeared in that infamous Bombay bomb blast cases of 1993. The documents runs into 1.5 lakhs pages. The index was 2.5 thousand pages. The judgment of the Tata court was 5,000 pages. And there were hundreds of accused who were facing Supreme Court. So my job was tough because I told the judges that ultimately you have to give the judgment. I can at least make your task easier in the sense that I will compile these things in such a manner that will be easier to understand you each and everything. So this is one part of it. So I became lawyer of terrorists. I became lawyer of doctors also. I appeared for a number of doctors who were in Delhi government and they got regularized. I appeared for Air India pilots also. So this is a varied field. In law, so far law is concerned, we at least come across each and every segment of society, be it business, be it general government servant, be it a normal person, and any kind of things. So my assistance is available anytime, anywhere you require. Best wishes, and thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित तौर पर आप अभी आपको काम है और आप जाना चाह रहे हैं, हम चाहेंगे कि आपको लव ऑफ टोकन दें हम अपने ख़ास तौर पर इस संस्था की ओर से, जहां हम इसके लिए बुला रहे हैं। हमारे बीच में प्रजात जी से आग्रह है कि आप आएँ, और भी टीम के हैं, राठौर जी आप आएँ, उन्हें लव ऑफ टोकन दें प्लीज़। फिर से बोले, आ जाइए सर आज प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारे इस खास संस्था को आपने आशीर्वाद दिया है। और निश्चित तौर पर जब संस्था आगे बढ़ती है तो उसमें कई लोगों का योगदान होता है। उसमें श्री प्रकाश सिन्हा जी से जब हमने मिला था, काफ़ी केसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी ये समय निकाल कर हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद रहते हैं। हमारे बीच में एक और गेस्ट हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो मंच में आएँ। दुबे सर हैं, आप ITS से हैं, आपसे आग्रह है सर कि आप मंचासीन हों प्लीज़ सर, प्लीज़। जहाँ दोस्तों आप ख़ास तौर पर ITS से हैं और MOU साइन करने के लिए आप आए थे इस कॉलेज में, यहाँ पर राजेश गुप्ता जी के साथ। हम आपके स्वागत के लिए हम बुला रहे हैं प्रजात सिन्हा जी को कि आप आएँ और सतीश कुमार जी का स्वागत करें प्लीज़। सब प्लीज आगे। हाँ हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सर कह रहे थे कि आप, हम तो एजुकेशनिस्ट हैं, हम बिजनेस पे क्या बोलें, लेकिन बिजनेस भी तभी चलता है जब एजुकेशन से जुड़ा, और इसी से जुड़ा हुआ हमारा यह तीसरा कॉन्फ्रेंस भी लगातार चल रहा है। और हम आग्रह कर रहे हैं प्रज्ञा मैम से कि आप आएँ और अपनी बात रखें प्लीज़। प्रज्ञा मैम। Good afternoon, esteemed guests, gentlemen, gentlewomen, and friends from media. It is indeed my good fortune to have been a part of this epoch-making event, the Business Education Conclave 2025. As I look upon my journey of penmanship, I found that the kind of education we all have been receiving over the years have changed lately. This change, I understand,
must have taken place due to pandemic or the enhancement of technology or various other aspects. The paramount concern that strikes me every now and then is what will be the future of our coming generations. I see them engrossed with gadgets like smartphones, tabs, computers, etc., which render a very heavy amount of processed information. Books are hardly to be seen in the vicinity. Education that lacks books involvement is quite dangerous, therefore resulting in a hollow knowledge without a strong educational edifice. I can surely say that any AI tool or Google or any other search engine will fail to create any of the stalwarts in the respective fields. It is very important for a child to have a constructive base of knowledge, which takes us back to the old classical educational system where the teachers passed on the knowledge and repeated again and again for further refinement. The nuances were taught to the novices until the teacher wasn't assured of the fact that the students are completely ready to practice it in their lives. It takes sincerity, patience, and perseverance to gain knowledge no matter what the subject is. Never ever enter a battle of wits half-armed. The other day, I happened to have a word with a young student of journalism who debated with me on the fact that radio never announced hard news. For her, the only way to recheck the information was Google or any other AI tool. These systems come to the rescue where these search engines or AI tools many a times fail to provide proper anecdotes and figures to support its result, yet we all trust it so much. Please, for heaven's sake, do not mistake me as someone who is against these AI tools or technology. Rest assured, I speak with the utmost seriousness, for I would not wish my words to be mistaken for mere embellishment or polite acquiescence. It is a fact that all those who invented such AI tools or search engines too read books and carry in-depth knowledge about their respective fields. The vanishing propensity of going back to the books is quite alarming. Lately, the decreasing number of quality readership, empty libraries where the books pages are turning yellow, the lowering number of library memberships, merging of libraries due to maintenance issues or safety concerns or paucity of funds, etc., have turned out to be a dreadful nightmare for all the intellectuals. These happenings are quite disapproving, as it is going to put us, as well as the forthcoming generations, into danger, resulting a fortitude nearing its limits. Even an impecunious have right to books, no matter what their disposition of life is. It is fairly said by Shakespeare, which I believe is prevalent in my life too, to be a well-favored man is a gift of fortune, but to write and read comes by nature. My English teacher in high school once asserted that if you are not factually sound and wholly accurate in every sense, you would fail in the education I impart to you. Little did I know that she was constantly hinting on reading more of books, so that I nourish my mind with knowledge, ideas, and wordplay abound. I would like to reiterate on the point that books are our first best confidante to which we can refer to any time. Search engines or AI tools must be kept as the last option when every piece of written work fails to answer our curious minds. Many of you might reminisce that while we loved traveling by our prestigious Indian railways, we eagerly waited for the train to halt as to buy our favorite comic book, magazine, or newspaper from none other than the A.H. Wheeler Company's stall at the platforms.
I remember my grandmother telling me about how fond she was of the magazines in those days. Her eyes sparkled like stars as I hearkened to her traveling tales. Those days were lost. Those golden days are lost to the use of these extensive phones and whatnot. Due to low understanding of knowledge and language, several times we writers are asked to pen down lower than our style. But very rare have I found that someone urged to understand the style and language. You cannot ask us to be lower than what we are, simply because you're ignorant of the knowledge one must possess and the fact that you are willingly turned into a slave of gadgets. Beware of false knowledge. It is more dangerous than ignorance. As I stand here in the Business Education Conclave, I would surmise with free spirit, no business can stand without basic and focused education. A base as strong as an ox can help you stand in this ever-changing world. You see, knowledge isn't free. You have to pay attention to it. My heartfelt gratitude to the elite Chamber of Commerce and Industry, Mr. Manavendra Kumar and Mr. Parijat Sinha, who have chosen me as the guest of this afternoon and allowed me to put forward my view in front of you all. I extend my deepest wish of goodwill and contentment to all. May your noble spirit be befitted with warmth and splendor of Almighty. Thank you. ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा डे सरकार। मैम, हमारे बीच में अनुज जैन जी हैं, उनसे आग्रह है कि आप मंचासीन हो प्लीज़। ख़ास तौर पर बेसूर के से जुड़े हुए दीपक लाल जी हमारे बीच में हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप मंच पर आएँ प्लीज़। अनुज जैन जी से आग्रह है कि आप मंचासीन हो प्लीज़। अनुज जैन जी नहीं है जी जी। अनुज जैन सर को स्वागत करने के लिए हम प्रजात सिन्हा जी से आग्रह करेंगे कि आप आएँ, और परविंदर जी से भी आग्रह है कि उनका स्वागत करें प्लीज़। डी लाल जी का स्वागत के लिए हम बुलाना चाहेंगे रितेश सिन्हा जी हमारे बीच में हैं। रितेश सिन्हा जी सुधीर कुमार जी से आग्रह है कि आप आएँ, उनका स्वागत करें प्लीज़। डी लाल जी हाँ दोस्तों, और देर न करते हुए हम सीधे प्रोफेशनल स्पीकर कोटा से आए हुए हमारे
खास दोस्त जो लगातार एक फ़ोन पर अपने कभी इनकार नहीं करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप आएँ और अपनी बात रखें, संक्षिप्त में ही रखें। जी, डॉक्टर NP गांधी जी। Good afternoon, everyone. Respected dignitaries on the dais, of the dais, dear youngsters, research scholars, academicians, industrialists, last but not least, upcoming nation builders of the nation, women participants. First, I would like to reflect main highlighting point of this theme of this today conclave. First, we all need to understand education. Without understanding concept of education, no any institute can build up their strategy for betterment of education and how they can increase participation of youngsters in colleges, universities, because that is the much biggest problem in India if I look at it. Because government doing very great initiative we can see in the field of industry, integration, startup. We can see recently initiative of new education policy that now top of the university institution can be industry experienced professional. That is the recent changes that higher education institution
getting that from our Honorable Prime Minister, that we can see that because this is the need of the hour, that industrialist, industry experienced professional can only build up the good institution, because foundation is depend upon not only academic theoretical knowledge, that is only gained by industry experience that we can see in other countries. So because education, first word E, that we can see that first thing, that how we can enlighten the students, and faculty should concern about that, how they can enlighten, how can they can faculty can entertain to students. They can observe that study knowledge in a practical manner. Case study approach they can use. Second of word, that education, that is the D, that is means of that development. Holistic development is the main priority of teacher. Third, U, we can see that upliftment, because education is not all about your self-development. It is all about upliftment of the society, of the stakeholders, needy people. How we can get into deeper knowledge that can utilize for upliftment of the society. Fourth one, C, that education always demand critical thinking. It is just journey, never finish, because whenever you think critically, automatically new thought, innovation, innovative ideas will come. Automatically innovation will foster, and definitely startup ideas that we can see. Our country is one of the biggest country in the world that having youth population in whole world, and we are here to foster entrepreneurship, startup through critical thinking and upliftment for betterment of the society. Fifth one, A, that is means awareness, because if particular institutions have done very great job, but they are not able to conceptualize their initiative among the society, definitely awareness, that we can see that IEC tools is the very much important, information, education and communication. So definitely awareness is the pillar for nation growth. Sixth one, T. T means transformation. Definitely when we get into that particular degree course, definitely particular students want transformation in their particular skills. Next, I, that is innovation. Without innovative ideas, abilities, student cannot perform their task in effective manner and for betterment of the society. Last one, O, that is the opportunities, because education itself create opportunities. After degree courses, particular BBA, MBA or particular any higher education degree course, every student needs opportunity, how they can get into corporate and gain the knowledge of the industry experience, then they can apply within their career. Last but not least, that is nurturing, N, because, and this is the main fundamental aspect of the institution, top-notch official personalities, that they should concern about student, nurturing the students
and empowering them to get better position and better utilization of their service and their skills for upliftment of the society. So I would like to request from the platform of Elite Chamber of Commerce and Industry to government and some policy makers who came here in first session also, that really if we want to create the change, definitely industry and educational institution come forward for betterment of the nation building, and definitely it can be happen by creating the opportunity, maximum utilization of the youngsters for startup and utilization their skill for some social problems, so that changes can be developed that particular solution to the problem, and new startup can boost that particular, because there are various challenges in India. We can see that like climate changes, disaster management, we can see renewable energy. There are various sectors that students can focus, and higher education institution also can customize their curriculum, education. They can create the new courses, and definitely it will boost the skills of students, and it will be just betterment for our India, and definitely Digital India missions will create the awareness for all these things. And I think that some government initiative that also for social welfare schemes and other schemes, that higher education institution should take a step forward to aware about that schemes to youngsters, and organize some not industry, also government policy making like guest lecture, so that they can betterment, their student can utilize their talent, their skills for betterment of the policy creation. And because I have been a former state project officer in government of Rajasthan, and I have been a National Digital Transformation Awardee also in 2022 for Pehchan portal in government of Rajasthan. We have implemented for vital statistics, birth, death and marriage registration, and for that I have received with my team and Honorable Joint Secretary and Director Honorable IS Dr. Opi Berwaji. In that leadership, I have been able to institutional innovation. I have done that innovation with my team, and we have received that accolades and recognition from the CII in National Digital Transformation Summit. So I want to request to all youngsters, please go ahead in policy making, decision making, some position in government, in top-notch policy making organization. You can take that opportunity, you can do something for society, you can spread the government schemes and do betterment for the by implementing your social skills, and you can go into monitoring, evaluation and data analytics. So many positions are there in government sectors in a project-based position, and that is the main ultimate aim for whole education and academia and industry partnership, that how we can create the change for the society and how we can use the huge manpower that is present in India for betterment of whole nation.
Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद एनपी गांधी सर, आप आए, अपनी बात को आपने रखा है। जी हमारे बीच में मेजर आरती तिवारी जी हैं, आप बीसीसीएम कॉलेज से जुड़ी हुई हैं, आपसे आग्रह है कि आप मंचासीन हो। मेजर आरती तिवारी में। जी हाँ दोस्तों, अब देर न करते हुए हम ख़ास तौर से डॉक्टर सतीश जी से आग्रह करेंगे कि आप आएँ और अपनी बात रखें। जी डॉक्टर सतीश सर। अब सर उन्होंने गलत काम, सॉरी। Very good afternoon, one and all present in this August gathering. I'm very thankful to Mr. Manvinji, ECCI, for giving me this opportunity to speak before you. Being a teacher, I know how difficult it is to conduct a session in the post-lunch session. But yes, we know that I'm here to engage it. In the morning session, the topic was very interesting. That was innovation, education, and the conclave itself is all about the business education conclave. Mark you, without innovation, no survival. And I'm here to emphasize on that. I quote Mr. C.K. Prahlad, famous strategic management guru. Business depends on the profit. And again, if you are not innovative, you have no future. Why? We all have witnessed many industries have vanished, many companies have vanished. There used to be a Kodak life in everybody's, Kodak moment in everybody's life. No more. There used to be T-Series, there were many other organizations. There was a Nokia also, long back. What happened to these companies? Where they are today? It is all because they never bothered about innovation. Innovations is what? Innovation is something which has got a commercial value. There is an invention and there is an innovation. We must understand first of all, invention is something, yes, it is there, it is a need. And that's why we started seeing from bulb to this CFL bulb today, tube and then CFL and then LED. But at the same time, there's got a commercial value also. We are no more using bulbs because it is consuming more energy, giving you more heat and costly. But LED and CFL are less. And that's why industries are moving very fast. Now, one of the genius, I should say, all of us, most of us, I must say that Apple, most of the people are users of the Apple. And Apple today use this country as a largest exporting of its product. But what I should emphasize here, Mr. Steve Jobs, overnight, or I can say with his own innovations, today from, you can say, desktop to the palm top, everybody is busy here today. The question is what? It is all about the innovation. And we are not behind, because today we have got innovations different field. We got a digital in one. Today you talk about UPI. The idea is very simple, that why we are talking about innovation today, because we have to focus on this aspect. Otherwise we'll be behind. India is making inroads into the world today because of its UPI. More than 50 plus countries have signed with India. Now this is where business also coming. This is where India is integrating the world countries. So that's one aspect of the innovation. Now, what I see personally, that such kind of integration within the education and industry, because hand-holding is a must. I must request the industry people, industry doyens which are here, that they must encourage the students. I being a teacher, I always encourage my students that take industry seriously. And at the same time, industry must encourage my students also, our students also. After all, it's a give and take. Knowledge is something which we try to impart to the students.
nahi jnanena sadisham, nothing beyond knowledge, nothing is like knowledge. It is because of the knowledge that we are here. India wants to become Vishwaguru, yes, it is all because of. Ever you thought that why 2008 has not influenced us, affected us? इतना बड़ा crisis world में आया, financial crisis, India को तो कोई problem नहीं हुआ. Because it was our knowledge system. At the same time, Indians know, Indian businessmen, the business acumen, they are the one. इसलिए जब 2008 में crisis आया, Citibank, many companies gone down, it was the Indian business managers, Indian leaders, C.K. Pandit, who was given the chance to, responsibility to take care of the Citibank. So I must emphasize here, the Indian knowledge is something which we must cherish, we must encourage. The question is, how to go further? We were witnessing all those discussions, hand in hand holding, government policies. Yes, government is very much. Remember one thing, what happened to USA is there. 95% of the companies are there. They are all startups. We must change our mindset. They are the one, उनकी company खत्म होती है फिर नहीं आती हैं. Startup, failure, success, like this. And many companies, they fail, then they come up. But still, we have to encourage this kind of thing in our, at least we feel proud today because we have got a you can say, more than 100 plus today, which are in the billion. The question is, India has got the new ecosystem today, based on the technology, new emerging technologies, new things. I, Dr. Shankar, representing IT School of Management, I must tell you that we had integrated our syllabus for the 25-17 based on AI integration. We have started introducing AI to our students. So the students, those are going to join, they are going to be introduced with the AI, artificial intelligence, because we don't want to be left behind. The use of AI is what? India wants to become a hub of AI. India already wanted to become a hub of, that's why chip manufacturing. Why? Because we don't want to be leaving behind. We don't want to be. The question is, we are all in a race. We all are in the race, and if we don't progress, we will be left behind. But that race can be only won when we have got a knowledge with the technology, imbued with technology, imbued with emerging technology, new technologies. When I say technology, it's not when they're drone or machine learning or AI or other technologies. We must take it seriously. And that's why here I must praise that Government of India is making lots of efforts in terms of promoting startups in our institutions, in our universities, colleges, encouraging our students to go for innovative ideas, and they are trying to nurture it. And at the same time, our government is also encouraging, that is, hand-holding. But I tell you, 30 years back, it wasn't there. 30 years back, we even couldn't think of it. Right, that is the changing India. That the India which started with the just black and white TV, and today gone to this, so it means there's a lots of change coming. But the question is how to accept this change. The problem with the students is that they are looking for shortcut. That is my concern also. No shortcut to success. We must have a proper knowledge, because industry requires proper knowledge. And if this knowledge is not there, then probably somewhere some element is missing. So this connecting element is what? Knowledge with application. India today boasts of, 200 to 300 million ready-made market. That's why others are coming to us. This 200 to 300 ready-made market, we are the largest one of the market in the world. No company wants to be left behind. No company. On top of it, India is oozing out, churning out more than millions of graduates every year. Yes, we are there. At the same time, we have got a strong ecosystem. If I put like this, ITs, IIMs, and ITs, right? So we can say that yes, we are progressing. We are making a dent, and that's why when I talk about innovation, it's a ISRO. Just see how innovation ISRO has come up, how HL has come up, many more. They are the glaring example of the success in this country. So what I wish to say, that in such conclave, there is a sense of responsibility among the educationists, at the same time industries also, that we should go hand in hand, we should join hand in hand, we must encourage each other, because industry cannot survive on its own. They are the one, those who are using the latest technology. At the same time, academia is basically, they are handicapped because of certain lacuna, because they don't have much capital with them. They don't have much facilities with them. So with the changing time,
if we can develop a synergy between these two, we can bring laurels to this country. We can bring laurels to the world. With these words, I must thank ECCI for giving me this opportunity and this learned gathering, for patiently listening to me. Thank you very much. Thank you, everybody. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपके जो विचार हैं उसमें कई लोगों को यहाँ पर लाभ भी होगा। और हमारे बीच में मेजर आरती तिवारी मैम आ गई हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंचासीन हो मैम, प्लीज। आप ब्रिटिश कोलंबिया मैनेजमेंट स्कूल से जुड़ी हुई हैं और लगातार हमारे कार्यक्रम में आप आती हैं और अपने विचार भी रखती हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंचासीन हो और हम आग्रह करेंगे प्रविंदर जी, सुधीर जी से कि आप इनका स्वागत करें, प्लीज़। इस बीच में देखिए युवा हैं और युवा एक ऐसे हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स पर काम करना शुरू किया है और वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, और उनके स्टॉल भी लगे हुए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे पीयूष मिश्रा जी से कि आप आएँ और आप क्या कुछ कर रहे हैं इस पर अपनी बात रखें। जी पीयूष। गुड आफ्टरनून। आप लोग में एनर्जी की थोड़ा कमी लग रही है अब? सब सुन रहे हैं? ओके, सो इंट्रोडक्शन तो मेरा दे दिया। माय नेम इज़ पीयूष मिश्रा। आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड फाउंडर एंड सीईओ ऑफ M&M प्राइम वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। आप सबके टेबल पे एक पिंक कलर का पेज पड़ा हुआ होगा, वो मैंने ही रखा है। सो मैं फाइनेंस गाय, आई एम अ फाइनेंस गाय, तो फाइनेंस की ही बात करूँगा, वेल्थ मैनेजमेंट की बात करूँगा। सो जब से मैं हूँ यहाँ पे एजुकेशन की बात बहुत ज़्यादा हुई है, बट एक दो चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं जो एजुकेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं अभी के टाइम पे। एक फाइनेंशियल एजुकेशन और एक लीगल एजुकेशन। सो लीगल में बात करने के लिए थे बट अभी फ़िलहाल है नहीं, तो फाइनेंस के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। सो फाइनेंशियल एजुकेशन इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि आज के भी टाइम में कुछ लोग अपने 50s की एज में होंगे, समवन इज़ अराउंड 55-60 एंड दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन एवरीवेयर, नाइदर इन म्यूचुअल फंड नॉर इन FD, इंश्योरेंस, कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करते। सो हमारी कंपनी का मोटिव ये है कि हम इंडिया की हर एक फैमिली में एटलीस्ट म्यूचुअल फंड को पहुँचाएँ। सो वेल्थ मैनेजमेंट कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है कि आपकी फैमिली में कोई भी अभी न्यू अर्निंग करना शुरू किया, फर्स्ट अर्निंग में ही उसका एक मेडिक्लेम, एक लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद जो भी अमाउंट बचता है उसका एटलीस्ट 20% उनको म्यूचुअल फंड में या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। सो म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ बातें होंगी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जान सकता हूँ आप में से कितने लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। आप में से कितने परसेंट होंगे? 5 to 10%, 20% मान लेते हैं। सो मेट्रो सिटी में हम देख रहे हैं 20% के आसपास लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 80% अभी भी इन्वेस्टमेंट से दूर हैं। सो अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 4 to 5% लोग आज के टाइम में मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, PMS के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट इक्विटीज़ में। सो इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, ये कितने लोग को लगता है? व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट? बाकी किसी को नहीं लगता इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है? नहीं, सबकी एनर्जी थोड़ा लो हो गई है। सबको पता होता है इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, बट लोग इन्वेस्ट करते नहीं हैं। ये फियर होता है कि मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, अगर मार्केट प्राइस नीचे हो जाता है, ऊपर हो जाता है तो हमारा लॉस हो सकता है, रिस्क है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से लोग मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। अर्निंग आप सबकी है। सो मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूँ। इंडिया में मार्केट स्टार्ट हुआ, BSE स्टार्ट हुआ 1978 में। अभी अप्रॉक्स 79 में अप्रॉक्स 45 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं एवरेज रिटर्न्स की बात करूं तो 16 to 17% का CAGR बना हुआ है। एवरी ईयर 16 to 17% का रिटर्न मार्केट दे रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट मार्केट दे रहा है, सेंसेक्स दे रहा है। सो म्यूचुअल फंड की बात करूं, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक फंड मैनेजर होता है जो हाईली क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, एक अच्छी एक्सपर्टाइज लेके एक फ़ंड बनाता है। उस फंड में लोगों के पैसे इन्वेस्ट होते हैं और फंड मैनेजर
आइडेंटिफाई करता है उसके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि उस पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप एक छोटा सा भी अमाउंट डालते हैं तो एटलीस्ट 50 to 60 कंपनीज़ में आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो रहा है। सो म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है सारे फंड बहुत रिस्की होते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग तरह के फंड्स होते हैं। सो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आपको इस स्टेज से नहीं दे सकता हूँ, उसके लिए आपको एक फ़ोन लगाना होगा। आपके हाथ में जो पेपर है उसके नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर कॉल करके बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो मेरी तरफ से बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ, इसके लिए आप सबको इन्वॉल्व करना चाहा। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ECCI। सो थैंक यू सिन्हा सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। और देखिए, और टाटा AI से जुड़े हुए अनुज जैन सर हमारे बीच में हैं, अपने विचार रखें प्लीज़। Thank you. Yeah, respected guests and my dear friends. First of all, thank you for giving me this opportunity. तो I am here to represent Tata AI Life Insurance. तो मेरे दोस्त ने अभी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कुछ बताया, स्पेशली म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ज़रूरी है उन्होंने बोला, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड ज़रूरी है, ठीक है। अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो दैट इज़ ए कंपल्सरी। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, जब लाइफ इंश्योरेंस शुरू हुआ तो ये सिर्फ एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट था। धीरे धीरे डेवलपमेंट्स बढ़ी, जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी बढ़ी तो नए नए तरह के प्लान आने लगे और लोगों ने इंश्योरेंस की ज़रूरत को समझा। कोरोना काल में आपने देखा ही होगा कि इंश्योरेंस ने कितना बड़ा रोल प्ले करा, चाहे वो मेडिक्लेम हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, लोगों ने उसको यूटिलाइज़ करा। तब उन्हें सच में समझ में आया कि इंश्योरेंस क्या है और इसकी क्या ज़रूरत है। जनरली क्या है कि हम गाड़ी का तो इंश्योरेंस करा लेते हैं लेकिन अपना इंश्योरेंस नहीं कराते। और इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस की, ज़्यादातर लोग अंडर इंश्योर्ड है। अगर किसी से डिस्कस किया जाता है तो वो हमेशा कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन क्या उसको जो उसने इंश्योरेंस ले रखी है उसके बारे में उसे पता है या नहीं पता है, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए, अपनी बीमारी को बताने के लिए, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाएं अपना फाइनेंशियल असेसमेंट के लिए, अपनी लाइफ इंश्योरेंस असेसमेंट के लिए, समझें कि इंश्योरेंस क्या है क्या नहीं। अगर टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस की बात करता हूं तो वी आर द वन ऑफ द लीडिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, स्पेशली नंबर 1 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया फॉर प्रोटेक्टिंग पीपल। तो हमारे पास जो, अगर हमने ज़्यादातर लोगों का लाइफ इंश्योरेंस किया है तो वी आर द नंबर 1 इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी डोमेन इन इंडिया। तो हमारी ये स्पेशलिटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना। लाइफ इंश्योरेंस हमारे पास हर तरह के प्लान हैं, हर तरह के प्लान है, जैसे बच्चों के प्लान, टैक्स सेविंग प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, ग्रोथ प्लान। तो अलग अलग तरह के हमारे पास प्लान है जो हम लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से प्लान देते हैं। अगर IRD की बात करें तो IRD ने एक मिशन लॉन्च करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोटेक्ट करना। इसी कड़ी में टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक मिशन लिया है कि 2030 तक हमें 10 मिलियन लोगों को प्रोटेक्ट करना है। इसी मिशन में हम आगे बढ़ाते हुए हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। वो आप हमारे साथ जुड़ के सबसे पहले तो कुछ लर्न करेंगे, अर्न करेंगे और इस मिशन में हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। तो मेरी टीम यहीं पे ही है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर कई लोग अभी मोटिवेट होंगे आपके और कई इंश्योरेंस जरूर करवाएंगे। देखिए, हमारे बीच में मेजर आरती तिवारी मैम हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप आएँ, अपने विचार रखें। लेकिन इसके पहले अनुज जैन सर का हमने स्वागत नहीं किया था, हम चाह रहे हैं कि हमारी टीम आपका स्वागत भी करना चाह रहे हैं। जी, प्रजात सिन्हा जी से आग्रह है कि आप आएँ, उनका स्वागत करें प्लीज़। अनुज जैन सर। ओके 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 जी सर। मेजर आरती तिवारी जी से आग्रह है कि आप आएँ, अपने विचार रखें।
ब्रिटिश कोलंबिया निश्चित तौर पर तेज़ी से बढ़ता हुआ इंस्टीट्यूशन है और कई हमने अनाउंसमेंट भी किया था, कई अभी प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, जिसे ECCI के साथ भी उनका एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। जी। Good afternoon, one and all, to all the dignitaries on the stage and everybody over here. I represent British Columbia College of Management, and the founder person was supposed to be here, but due to some reason he is not here, Mr. Deepak Jha, a visionary in the field of education. So the vision of Mr. Jha was, the source of inspiration was that we should create an education system which produce jobs. As we are talking today, business education, so our organization, our college, BCCM thinks that any education, any degree is worth when the student gets the placement. If they are not getting the placement immediately or they are not able to earn, then there is no point in the education. So he came with a very revolutionary idea that let's start a course where student can earn also at the time when student is studying. We just train the students in the field of hotel management as of now in offline. Over the time, yes, we are going to launch other courses as well. And student studies with us for 6 months, and then we provide them a placement of minimum 25,000 rupees in all 5-star hotels. So they keep on continue their education in online mode at their own time, our weekend classes, and they continue with their job. So after 3 years or 4 years, when any other student from any other college is completing degrees in hotel management, will go at a junior level of 7, 8,000, 10,000. Whereas in next 3 years, our student will become assistant manager earning 40,000 rupees minimum. So this is how we are trying to transform the education for our Indian youth. That is what our Prime Minister also says, Rozgar for, Yuva people. And the same, going further, we founded our one more college in France. We collaborated there with Collège de Paris and EIMT. Our students are going there for higher education, for MBA and other courses as well, at a very reasonable fee structure due to our tie-up. Then we have we have signed our one college in Switzerland, and soon we will be running all the online courses at a global level. Next, we have registered our own university in US, which will be first AI-based university online. So the concept of a founder is to make the education global, to connect all now we have done just a tie-up in Australia also. Soon we'll be publishing the details and doing a press conference for that. So our aim is to connect the global level for education, and we have achieved all this in just 3 years. We'll be completing a third founding stone in next month. So this is how we have achieved in very less time at a very fast pace. And our aim is to connect the students, teachers more on online basis. As ma'am was saying, that AI and internet will remove the visa for any education. Whole course is online. You can study at your own time, at your own pace. Everything is getting revolutionized now. So the aim is to take education, as everybody was saying, education needs transformation. That is what we are trying to do. And we are also coming up with a lot of certificate courses on employability, placement, and upskilling. So the focus of our organization, BCCM, is just to make the studies, the education, more and more placement-based, job-based, and upskilling-based. I'm thankful to the ECCI today for giving us the platform, and I hope all the dignitaries have good day here. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मेजर आरती तिवारी जी। हाँ, और दोस्तों देखिए, अगर आप एनजीओ चलाते हैं और आपको पैसे की ज़रूरत है, निश्चित तौर पर ज़रूरत रहती है, और इसी के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में गुजरात से आए हुए हैं सीए शंकर अंदानी जी। उनसे आग्रह है कि आप आएँ और अपने विचार रखें, लोगों को बताएं कि आखिर अगर CSR फंड नहीं भी मिलता है तो क्या उपाय है कि उनका एनजीओ चल जाए। और हम चाहते हैं कि कोई भी एनजीओ ऐसा ना हो कि हम एनजीओ पर ही एक कार्यक्रम अलग से करें। जी शंकर सर। नमस्कार।
शुक्रिया. Rather than speaking in English, I can talk in Hindi that all people will concern and they know better. Okay? हिंदी में बात करना राष्ट्रभाषा है हमारी, महत्व रहेगा. अभी सर ने बताया हमारी एक संस्था है सीता ट्रस्ट, साई इंडियन ट्रस्ट एसोसिएशन उसका नाम है. से भारत में CSR फंड्स नाम की कंसेप्ट 1947 से ही है, लेकिन CSR का जो इम्पोर्टेंस अभी मिल रहा है दैट्स ड्यू टू करंट सेंट्रल गवर्नमेंट दैट आर फोकसिंग ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. लोगों ने मिलके लोगों के साथ काम करना है और सरकार के नीतियों का फ़ायदा लेके आपको काम करना है. ये है CSR फंड का कंसेप्ट. और CSR हर एक कंपनी को, जो भी देश में कंपनी रजिस्टर लिस्टेड है, कंपनी जिसको आप बोलते हैं सेबी में लिस्टेड है, अगर आप शेयर मार्केट में है और जिसके कंपनी का प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो हर एक कंपनी को अपने प्रॉफिट का मिनिमम 2% सोशल वर्क के लिए यूटिलाइज़ करना है. यू टू यूटिलाइज योर प्रॉफिट फॉर सोशल वर्क, और यही CSR कहा जाता है. हर एक कंपनी, आज देश में कम से कम 3 करोड़ कंपनीज है, 3 करोड़ कंपनीज आर देयर. आवर फ्रेंड गांधी सर नो वेरी वेल, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी में थे एक बार CSR फंड के ही, कि भाई अगर आपको CSR चाहिए तो CSR आपको मिलता है, NGO को मिलता है, NGO विल गेट द CSR, बट दे हैव सम रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग योर डॉक्यूमेंटेशन. यू मस्ट फुलफिल योर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली, यू मस्ट हैव सम एक्टिविटीज़. देखिए आपने सब में बताया कि आपके सब एजुकेशन के आज फील्ड में हैं. सब आई हैव आस्क्ड टू सम पीपल, दे से आवर एजुकेशन ट्रस्ट इज देयर बट वी आर नॉट हैविंग अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट, वी हैव अ प्राइवेट फर्म. अगर आपका प्राइवेट फर्म है, आपका कंपनी है, तो आपको कोई भी फंड्स देने का नहीं करेगा. अगर आपका ट्रस्ट है, डेफिनेटली यू कैन, आपका ट्रस्ट है तो कम से कम ट्रस्ट आपका 3 साल तो भी चलना चाहिए. वो अगर आपका कंसिस्टेंट, मतलब आपका बिजनेस चालू है, कंसिस्टेंसी है आपके फर्म में, एटलीस्ट यू हैव टू वर्क फॉर एटलीस्ट 4 प्रोग्राम इन अ ईयर. साल में अगर 4 प्रोग्राम करेंगे, मतलब जो भी आपका एक्टिविटी करते हो, एजुकेशन करते हो आप, वुमेन एम्पावरमेंट करते हो आप, चाइल्ड डेवलपमेंट करते हो, वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, यू मस्ट एटलीस्ट 4 programs to be conducted in the year. Then and then you can get this, you can apply for CSR fund. Then you must have different documents like section 12A, section 80G, income tax certificate, 35A certificate. Then Niti Aayog, you must register your trust in the Niti Aayog, that is called Darpan portal.